Hey everyone, welcome back to CS वर्ल्ड। तो कल रात को मैं ओपन सी वाली क्लास नहीं ले पाया था। उसका रीज़न था मेरा वाईफाई। ठीक है, वाईफाई ठीक था मगर बहुत डाउन था। और फिर उसके बाद मेरा कोई काम नहीं हुआ क्योंकि मैंने क्या किया, कल शायद थका हुआ था, क्या था, मेरी आँख भी जल रही थी, ये वाली अभी भी जल रही है हल्का हल्का। अभी यार डॉक्टर को दिखाऊंगा। और इन सब के बावजूद फिर हुआ क्या कि कल रात को मैं चला गया लेटने। मैं कहा थोड़ा अभी 9 बजे है, कुछ देर लेट लेता हूँ, आधे घंटे रेस्ट कर देता हूँ, आँख को रेस्ट दे देता हूँ, उसके बाद मैं काम करूँगा। बट हुआ क्या, जब मैं लेटा तो मैं सो गया, सपनों की दुनिया में भाग गया। और फिर मैं जब उठा तो बज गए 12:30। तो मैं कहा आपसे फिर से सो जाओ वापस से। तो मैं फिर से सो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो कंप्लीट किए थे वहाँ तक, उसके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। कल मैं स्टार्ट कर दिया था बट प्रॉब्लम ये था कि वाईफाई की वजह से ये गायब हो गया था। मैंने कुछ कुछ चीज़ें लिखी थी। कंडीशनल इंडिपेंडेंस, ये कल का था 19, हाँ आज 20 है। तो मैं जो पढ़ चुका था उसके आगे बढ़ूंगा। समरी और साथ ही में एक चीज़ और कर लेता हूँ। आधा दिल आधी तुम, क्या नाम है, क्या बोलते पब्लिक। ठीक है। और हाँ, सुबह से मैं लाइव क्लास इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं चाहता तो क्लास ले सकता था, बट क्लास इसलिए नहीं लिया, उसका रीज़न है क्योंकि मेरे वीएस कोड में एक बग आ गया था। और वो बग ये था, जो था कि कंट्रोल शिफ्ट और टर्मिनल ओपन करने पर ये अरे अभी भी वही बग है। अभी भी मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगा कि कोई कोड लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, और ये बग अभी भी कंटिन्यू है। तो इसको मैंने सही किया था, ठीक है, प्रॉपर सही कर लिया था मैंने, पता नहीं फिर ये देखो ये सही है, ये पुराना वाला खुला है, इसको मारो गोली, ये देखो ये सही है। बट अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ तो क्या ये दिक्कत तो कर रहा है। ये क्या बात है। देखा, एरर यही था। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एरर, और ये करने पर ये हो रहा था। बट मैं अगर यहाँ से टर्मिनल ओपन करूँ तो न्यू टर्मिनल, यहाँ पे भी सेम एरर आ रहा है। और अगर मैं स्प्लिट टर्मिनल करूँ तो एरर यहाँ आ रहा है। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल विंडो खोलूँ तो यहाँ भी एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है। इसको मैंने, अब ये विंडो अगर ओपन है, मैं फिर से अगर करूँ तो अब ये एरर मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था सही करने को, और ये हुआ भी सही जैसा कि यहाँ दिख रहा है। बट अब अभी भी मैं फिर भी ओपन कर रहा हूँ तो ये वही दिक्कत दिखा रही है। अब ऐसा क्यों है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है, बट आ जाएगा। चलो तब तक पढ़ना चालू करते हैं, हमको इससे कोई वो नहीं है ना। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। अभी तो कोई काम नहीं इसका हमारा, प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं आगे। 6.4 की जगह 6.11 पे थे हम लोग। स्टैटिस्टिक इंडिपेंडेंस ये मेरा हो गया था। तो कल रात को ओपन सी वाली क्लास नहीं कर पाए थे, आज हम ओपन सी वाली रात को क्लास करेंगे। बस वाईफाई मेरा सही रहे, और इस तब तक में मैं इस एरर को भी हटा दूंगा। अरे यार ये क्यों ओपन हो रहा है, ये हो गया था।
यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक है, चलो अब हमारा है इनर प्रोडक्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो रिकॉल द डिफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट्स। आवाज आ रही है, साउंड वगैरह है? म्यूट लगा है क्या? हेलो 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 हेलो, साउंड तो आ रही है, इसमें क्यों नहीं आ रही? ठीक है, साउंड सही है, ठीक है, एरर वगैरह नहीं है। सॉरी, एरर कह रहा हूँ, साउंड वगैरह आ रही है प्रॉपर। जो एरर वगैरह VS कोड में आ रही है वो हम बाद में देखेंगे, हमको अभी काम नहीं है उसका। हम मेन इस पे आते हैं। तो आज हमारा डे है 20 और 20 तारीख है। जो कि इनर प्रोडक्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स पढ़ने हैं। Inner product of random variables. So recall the definition of inner product from section 3.3. We can define as inner product between random variables, which we briefly describe in this section. If we have two uncorrelated random variables, then vx plus y or vx plus y, since variance are measured, is अच्छा, प्रोबेबिलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे कि LLM में जब जाएंगे तो जैसे कि आप कुछ टाइप कर रहे हो, जो आंसर्स वगैरह आ रहे हैं वो प्रेडिक्ट होके आ रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी काम कर रही है, इसलिए प्रोबेबिलिटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि पहले ये हो रहा था कि नहीं, प्रोबेबिलिटी छोड़ देते हैं, बट प्रोबेबिलिटी का LLM में है ना बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, तो हर वर्ड, जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो पीछे के वर्ड को गेस करके ही आगे आ रहा है, वो प्रोबेबिलिटी का ही काम है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसी वजह से प्रोबेबिलिटी का पढ़ना जरूरी है, इसीलिए मैं इसको छोड़ नहीं रहा हूँ। इफ वी हैव टू, ये हमारा हो गया। Since variances are measured in square units, this looks very much like a Pythagorean theorem for right angle triangle। ये सब लोग को मालूम है कि Pythagoras theorem क्या होता है। x plus y is equals to vx plus vy। और in the following we see whether we can find a geometric interpretation of a variance relation of an random variable। और ये रहा हमारा, ये ऐसा कुछ दिखेगा, ये vx है, ये vy है, ये उसका अच्छा रूट है, स्क्वायर रूट है, कुछ ऐसा दिखने वाला है ये। मतलब अगर हम ट्राइंगल बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये एग्जैक्टली ये CB अगर है, ये हमारा ये V ऑफ x होगा और ये V ऑफ y होगा, और ये अगर होगा तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ V ऑफ x प्लस y, जो होगा बराबर होगा अंडर रूट ऑफ V ऑफ x प्लस V ऑफ y। अब यहाँ पे V ऑफ x V ऑफ y मतलब वह, ठीक है, मतलब वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल्स कैन बी considered vector in vector space, and we can define inner products to obtain geometric properties of random variable. If we define x comma y, covariance of x comma y for 0 mean random variable and x and y, we obtain in inner product। We see that ये हमारा है covariance x comma x 0 है, तो covariance x plus zy और अल्फा एक्स वाई, अल्फा जो होगा वो एलिमेंट ऑफ R है। ठीक है, और यहाँ पे फिर डिफाइन x कमा y, तो हमारा ये कोवेरियंस होगा x कमा y फॉर 0 मीन रैंडम वेरिएबल। जीरो मीन, वैसे आज मौसम बहुत अच्छा है बाहर का। वेरिएबल्स
x and y we obtain inner product. We see that the covariance is symmetric, positive definite and linear in either argument. The length of random variables is length of random variable क्या हो जाएगा? Variable is mod of x. Covariance of x, x is equals to हमारा यहाँ पे आ जाएगा equals to v of x और sigma x. ठीक है. Its standard deviation, that is, the longer the random variable, the more uncertain it is, and the random variable with length 0 is deterministic. If we look at the angle theta between two random variables x, y, we get इस चीज को तो लिखना पड़ेगा. देखिए standard deviation. Standard deviation. The longer the random variable the more uncertain it is, and a random variable with the length 0 determined with the length 0 is deterministic. If we look at the angle theta between two random variables x, y, we get, if we look at the angle theta between two random variables x, y, we get cos theta is equals to x, y upon mod of x mod of y is equals to covariance x, y under root v of x or v of y, which is the correlation 6.8 between two random variables. This means that we can think of correlation as the cosine, as the correlation of the cosine of the angle between two random variables. When we consider them geometrically, we know from definitions that x or y, x, y is equal to 0. In our case, this means that x and y are orthogonal if and only if covariance of x, y is equal to 0. They are uncorrelated. Figure 6.6 मतलब कि ये वाला फिगर कह रहा है illustrate this relationship while it is tempting to use the Euclidean distance constructed. ये है Euclidean
Gaussian distribution 2 of random variables x1 or xy, x2. From the preceding definition of inner products, to compare probability distribution is unfortunately not the best way to obtain distances between distributions. Recall that the probability mass or density is positive and needs to add up to 1. These constraints mean the distribution live on something called a statistical manifold. The study of this space probability distribution is called information geometry. Computing distances between distributions are often done using Kullback-Leibler divergence, which is generalization of using Kullback divergence. Leibler divergence, ये क्या है? A mathematical statistics denoted by DKL, P of Q is type of statistical distance, a measure of how much approximating probability distribution Q is different from a true probability distribution. इसका चलेगा DKL of P और Q is equal to summation of px log px upon qx. ये है, इसको मैं लिख ले रहा हूँ. मैथमेटिकली कुलबैक हमारा क्या होगा? कुलबैक लेबलर डाइवर्स साइड में कहीं लिख ले रहा हूँ जिससे कि बाद में यूज हो. तो हो जाएगा डी के एल पी और एक्स पी और क्यू इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स लॉग पी एक्स अपॉन क्यू एक्स और एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स. अच्छा यार देख लो, एक बार क्रॉस चेक कर लो. ठीक है, डेटा वेटा सही है. Which is generalization of distances that account for properties of the statistical manifold, just like the Euclidean distance is a special case of metric and the divergence is a special case of two more general classes of divergence is called Bregman divergences and F divergences. The study of divergences is beyond the scope of this book, and we refer to more details in the recent book of Amari, one of the founder of the field of information geometry, Gaussian distribution. The Gaussian distribution is the most studied probability distribution for continuous value random variable. It is also referred to as the normal distribution. Its importance originates Gaussian distribution. Is the most well-studied probability distribution for continuous random value variables. Is the most well-studied probability distribution for continuous valued random variable. It is also referred as the normal distribution. Its importance originates from the fact that it is
has many computationally convenient properties which we will be discussing in following. In particular, we will use it to define the likelihood of and prior of linear regression, chapter 9, and consider a mixture of Gaussian for density estimation, chapter 11. There are many other areas of machine learning that also benefit from using Gaussian distribution, for example, Gaussian process, variational inference, and reinforcement learning. It is also widely used in other applications areas such as signal processing, Kalman filter control, linear quadratic regulator, and statistics hypothesis testing. मतलब Gaussian distribution की बात करें पॉसिबल यूज होता है अदर एप्लीकेशंस में, जैसे कि ये सिग्नल प्रोसेसिंग, कंट्रोल, स्टैटिस्टिक्स. Univariate one-dimensional Gaussian. The red cross shows the mean and the red line shows the extent of the variance. Multivariate two-dimensional Gaussian view from top. The red cross shown the mean and the color line shown the red cross हमारा यहाँ पे है सिर्फ mean color line shown the contour line of density. For univariate rendezvous, the Gaussian has a density that given by for a univariate random variable, the Gaussian distribution has a density that is given by P of x mu sigma square is equals to 1 upon 2 pi rho square exp minus x minus mu whole square by 2 sigma square. The multivariate Gaussian distribution is fully characterized by a mean vector mu and a covariance matrix sigma, and defined as is fully characterized by a mean vector mu. एक मिनट दो सर
Hello guys, I am back. चाय पीनी है? चाय ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन is fully characterized by a main vector mu and a covariance matrix and a matrix sigma and defined कैसे किया जा रहा है इसको? P of x or u sigma mu sigma is equals to 2 pi minus d by 2 minus 1 by 2 exp minus 1 by 2 x minus 1 to the power d summation of minus 1 x minus mu, where x to the x element of our power d, we write p of x is equals to this and chai bolo chai. We write p of x is equals to n x is element of u or this shows our bivariate Gaussian and mess with the corresponding contour plot. Shown a univariate Gaussian and bivariate Gaussians with the corresponding samples. The special case of Gaussian with zero mean and identity covariance, that is mu is equals to 0 and sigma is equals to y, is referred to as a standard normal distribution. Gaussians are widely used in statistical estimation and machine learning, as they have closed form expressions for marginal and conditional distributions. In this chapter 9, we use these closed form expressions extensively for linear regression. A major advantage of modeling with Gaussian random variable is that variable transformations are often not needed. Since the Gaussian distribution is fully specified by its mean and covariance, we often can obtain the transform distribution by applying the transformation to the mean and covariance of the random variables. ओके यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात कहाँ गई? बाइवेरिएट गॉसियन विद कॉरेस्पॉन्डिंग सैंपल्स। ठीक है, बात आती है मार्जिनल एंड कंडीशनल्स ऑफ गॉसियंस आर गॉसियंस 6.4.2 खत्म हो गई भाई, नहीं खत्म होने वाली। गॉसियन एक बात बताऊं, मैं जितनी अच्छी मैंने आज तक, मतलब जितना लग के मैंने आज तक AI/ML की नोट बनाई है, आज तक के अपने पूरे पढ़ाई में मैंने कभी किसी चीज की नोट्स बनाई नहीं। मतलब शुरुआत तो हुई है नोट बनने की, ठीक है, बहुत कुछ दूर तक गया भी, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू कर पाया। बस रफ में जो भी करना है रफ में, जो भी करना है रफ में, नोट्स बनानी है रफ में। से प्रॉपर जो होती है ना नोट्स, वो कभी नहीं कंप्लीट किया मैं। हाँ, ये थी कि चैप्टर्स जैसे बुक्स थी, जैसे फिजिक्स की रफ अलग है, केमिस्ट्री की रफ अलग है, मैथ्स की रफ अलग है, ऐसा था, लेकिन प्रॉपर नोट्स की तरह ये नहीं।
गॉसियंस और गॉसियंस। और मेरे ख्याल से लड़के लोग नोट्स बनाते भी नहीं है प्रॉपर, कुछ ही होते हैं जो बनाते हैं, बहुत रेयर वाले क्या होते हैं कुछ लोग, लेकिन मुझ जैसे लोग नहीं बनाते। In the following we present marginalization and conditioning in the general case of multivariate random variable. In this, if this is confusing at first reading, the reader is advised to consider two univariate random variable instead. Let x and y be two multivariate random variables that may have different dimensions. To consider the effect of applying the sum rule of probability and the effect of conditioning, the explicitly write the Gaussian distribution in terms of concatenated state x to the power t, y to the power t, the whole power इसकी t है, so that तो अब तो ना नहीं याद आने वाली, यानी कि मैं पूरी थ्योरी वेरी नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। इन द वी प्रेजेंट केस ऑफ वेरिएबल्स वी प्रेजेंट मार्जिनलाइजेशन। एक तो ये ठीक है, दिख रहा हूँ मैं, इधर तो दिख रहा हूँ। तो ये हो गया 19, एक मिनट, बस थोड़ा सा रुको। एक्टिवेट 168 ठीक है। तो ये क्या है, p of x, y is equals to n mu x mu y comma summation of xx summation of yx and summation of xy summation of yy। यही आ रहा है। फिर where summation of x's, covariance of x's and yy, covariance of yy are the marginal covariance matrices of x and y respectively, where जहाँ पे हमारा एक्सेस है वो covariance of y, y है, और द मार्जिनल and summation of x comma y, covariance of the cross covariance matrix between x and y। summation of x y जो है सिग्मा x comma y is the cross covariance। x and y, the conditional distributions p of x or y is also a Gaussian।
also Gaussian given by P of x or y is equals to n x of y comma sigma xy mu of xy is equals to mu of x plus xy summation inverse y by sigma y minus mu y or sigma x or y is equals to xx minus sigma xy sigma inverse y by sigma yx. Note that in the computation of the mean in the y value is an observation and no longer random. Remark, the conditional Gaussian distribution shows up in many places where we are interested in posterior distribution. Kalman filter, one of the most central algorithms for state estimation in signal processing, does nothing but computing Gaussian conditional of joint distribution or Gaussian process, which are practical implementation. Practical implementation of distribution over functions. In a Gaussian process, we make assumption of joint Gaussianity of random variables. अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि जिनको प्रोबेबिलिटी वाला ये है कि प्रोबेबिलिटी इतनी क्यों पढ़ी जा रही है, तो प्रोबेबिलिटी एक अभी 3 ब्लू और 1 ब्राउन ने एक वीडियो बनाया, मतलब कल ही शायद आया है क्या, तो उस वीडियो को देख लेना, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं देख लेता हूँ वो वीडियो है कहाँ। वीडियो सॉरी होम पे जाओ। हाँ, बट LLM पे एक वीडियो बनी थी, शायद यही वाली है, 80 मिनट की वीडियो है, 3 ब्लू 1 ब्राउन पे। वीडियो का नाम है बट व्हाट इज़ अ न्यूरल नेटवर्क। ठीक, एक ये है, ये वाला नहीं है। LLM वाली वीडियो कहाँ गई जो मैंने देखी? वीडियोस LLM ये है, ये वीडियो, सॉरी है ना, ये वीडियो ना LLM। इस वाली वीडियो को देखोगे ना, समझ में आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी इतनी ज़रूरी क्या। ठीक है, इस वीडियो को जरूर देख लेना। लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक्सप्लेन ब्रीफली। ठीक है, अब ये क्या खुल गया? ये नहीं खोलना था मुझे, बंद करो, मिनिमाइज। ठीक है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ से देखता हूँ। ठीक है, इनके अलावा इसकी हेल्प जरूर लीजिएगा। ऐसा मैं कह रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो, बाकी मज़ा ही आएगा देखोगे तो। ठीक है, मज़ा ही आएगा, समझ में भी आएगा। Which are practical implementation of decision over function in Gaussian process. We make assumption of joint Gaussianity of random variable by Gaussian conditioning on observed data. We can determine a posterior distribution over function. Latent linear Gaussian models, which include probabilistic principal component analysis. We will look for PPCA in more detail in section 110.7. The marginal distribution P of x of joint Gaussian distribution x, y is itself Gaussian computed by applying the sum rule and given by P of x. Oh.
Gaussian and computed by applying Gaussian and some rule. P of x is equals to integration of p x comma y dy is equals to n x mu x comma sigma xx. The corresponding result holds for py, which is obtained by marginalizing with respect to x. Indicatively, looking at the joint distribution, we ignore integrate out everything. We are not interested in this, illustrated in figure 6.9 b. By varied Gaussian the marginal distribution mean to sigma x or y minus 1 conditional distribution. Consider the Gaussian distribution Q 6.1 पर वाला फिगर, और यहाँ पे वैल्यू है 0 to 0.311. We can compute the parameters of the univariate Gaussian condition x2 is equals to minus 1, x2 is equals to minus 1. Yeah. By applying this and this, obtain the mean variance respectively. Which book is this? हैंड्स ऑन, एक मिनट में, ये है मैथमेटिक्स फॉर एमएल, मैंने डाउनलोड की थी इसको, मैंने 106 ऑनलाइन, ये मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग मिल जाएगी आप देखोगे तो। और मार्क पीटर, इसकी लिंक पड़ी हुई है, मतलब इसके डिटेल्स में जाओगे ना तो डिटेल्स में मैंने पूरी ये जो प्रोजेक्ट मैंने बना कर रखा है ना AI/ML का, ये है ना, मतलब ये पूरा गिटहब पे मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसमें बुक भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये वाली ML बुक्स के अंदर पड़ी हुई है। अभी पटेल, ठीक है। और मैं फिर से दूर भाग गया, कहाँ गया, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। By applying 6.7 to obtain the mean and variance respectively numerically, this is solve किया जा रहा है इस फॉर्मूला से। जो ये वाला जो फॉर्मूला है वो 6.5.11 वाला जो हम लोगों ने देखा था ना, उसका मार्जिनल एंड कंडीशनल ऑफ गॉसियन एंड गॉसियंस और गॉसियंस का इक्वेशन है, ये उसे सॉल्व किया जा रहा है। उसके बाद था अभी जस्ट देखा है x1 x2 और सिग्मा, zero plus this into this minus y minus min y, 0.6 ये आया। सिग्मा निकालने गए तो 0.3 minus 1, 0.2 minus 1 सॉल्व करने के लिए, therefore the conditional Gaussian is given by x1, ये तो हमारे पास ये है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये -1
n इक्वल टू 0, मतलब n ब्रैकेट 0.6 ये वाली वैल्यू, 0.1 ये द मार्जिनल डिस्ट्रीब, एक मिनट, अच्छा ये है x1 की वैल्यू हमारे पास 0.03. In contrast, can be obtained by applying, which is essentially using the mean and variance of the random variables x1. For linear regression, we need to compute a Gaussian likelihood. Furthermore, we may be using the Gaussian prior. We apply Bayes' theorem to compute the posterior, which results in a multiplication of the likelihood and the prior, that is the multiplication of two Gaussian densities. So the product of two Gaussians the scaling constancy itself can be written in the form of Gaussian density either in A or in B with an inflated covariance matrix A plus B, and A comma B, A plus B, or A, B or A equals to A plus B. Remark for notation: the scaling constancy itself can be written in the form of Gaussian density either in inflated covariance matrix, that is C is equals to can be written in the form of Gaussian density. Textbook name: Mathematics for ML, Mathematics for Machine Learning. बुक की लिंक जो है वो गिटहब की लिंक दी गई है, यानी ये जो मैंने पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है ये वाला है ना, AI/ML का जो मेरा पूरा फोल्डर है ये वाला, साइंस टेक्स, ये उसको AI/ML का ना, ये पूरा फाइल साथ में जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं अभी तक में, ठीक है, वो OpenCV भी पैरेलल में चल रहा है, वो शाम की क्लास ले रहा हूँ उसमें, मतलब पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ठीक है। तो उसका जो प्रोजेक्ट वगैरह मैंने बनाए हैं वो, ठीक है, कोड उनके पड़े हुए हैं वहाँ पे, मैं पुश कर दे रहा हूँ, और जो पुश नहीं है वो आज पुश कर दूंगा, ठीक है। तो बुक ये हमारी है, बुक का दिखा दे रहा हूँ, वो कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ पे आपको देखोगे तो ये ML बुक्स लिखी हैं, इनके अंदर मैथमेटिक्स फॉर ML, ठीक है। तो ये बुक है, टेक्स्ट बुक का नाम है, बढ़िया बुक है, और कैन बी लिख दे रहा हूँ मैं नेम, मैथमेटिक्स फॉर ML, मैथमेटिक्स फॉर मशीन
लर्निंग, और लिंक भी दे ही दे रहा हूँ मैं। अपनी फाइल खोलनी पड़ेगी, रुक जाओ। ओपन विथ कोड, गिटहब वाली लिंक कहाँ गई मेरी? ये तो दूसरी बुक का है, एमएल बुक्स। गिटहब की लिंक पड़ी होगी यार उसमें, रुको 1 मिनट में दे ही देता हूँ। थोड़ा सा वेट कर लो, मैं 1 सेकंड में दे रहा हूँ। प्रोफाइल AI/ML, जो भी चीज़ें पुश नहीं है वो आज कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। आज मैं उसको वहाँ पे कर दूंगा, क्योंकि कई दिन से पुश शायद नहीं किया हूँ। यह है गिटहब की लिंक, जिसमें AI/ML की सारी बुक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। बुक्स हमारे पास AI/ML के अलावा और भी बुक्स हैं, जिनसे मैं लीनियर अलजेब्रा वगैरह पढ़ रहा था, ठीक है। तो वो बुक मैंने किसी गिटहब रिपोजिटरी से उठाई थी, ठीक है, ये भी बता दे रहा हूँ, वो भी मैंने ढूंढी थी, तो ये रही, ठीक है, ये वाली लिंक, ठीक है। और अगर इसकी डायरेक्ट लिंक चाहिए तो AI/ML वाली जो मेरी प्रोजेक्ट है, मतलब ये रोड मैप में मैंने उस बुक की डायरेक्ट गिटहब रिपोजिटरी भी डाल कर रखी है। यहाँ पे ये देखो, कंट्रोल करूँगा, क्लिक करूँगा, इनकी गिटहब रिपोजिटरी पहुँच जाऊँगा, और ये ओपन हो रही है, दिखा दे रहा हूँ ये भी, ठीक है, ये है, ठीक है, ये रिपोजिटरी भी है, ठीक है, जिससे मैं बुक्स उठाया हूँ, ठीक है। तो ये भी लिंक में पड़ी हुई है, तो देख लेना। कूल बैक, ठीक है, चलो हम यहाँ पे आते हैं, वापस इसको बंद करते हैं, नहीं तो फिर हाँ। Written in the form of can be written. Written in the form of Gaussian density. Either in A or B, A or B, in B, with an inflated covariance matrix. Matrix A plus B, that is C is equals N A of B, comma A plus B is equals to B or A plus B भी होगा। Remark for notation. For notation convenience, we will sometimes use n, x or m as to describe the functional form of Gaussian density, even if x is not a random variable. We have just done in the preceding demonstration. We know we wrote this, हमने ये लिखा है, तो ये neither a nor b are random variables. However, writing C in this way is more compact than 6.7.6, यानी कि ये sums and linear transformation 6.5.3 sums and linear transformations.
maximum sum of sigma ax or ay. If x comma y are independent Gaussian random variable, that is joint distribution, is given as p of x comma y. ये तो देखा है with px, ये भी हमारा देखा है, and py y is equals to n y of mu y sigma y by also Gaussian distribution and given by this. Knowing that ax plus y is Gaussian, the mean and covariance matrix can be determined immediately using the result from 6 point. This property will important when we consider IID Gaussian noise acting on random variables, as is the case of linear regression. Since expectations are linear operations, we can obtain the weighted sum of independent Gaussian random variable. A square b square a case that will be useful in this is weighted sum of Gaussian density. This is different from the weighted sum of Gaussian. The random variable exists from a density that is mixture of two densities, P1 x P2 weighted by epsilon. The theorem can be generalized to the multivariate random variable case, since linearity of expectations holds also a multivariate random variables. However, the idea of the square random variables need to be replaced by x. Consider a mixture of two univariate Gaussian densities. Actually, दूसरा theorem है. Consider two mixture of two univariate P of x is equals to alpha P1x plus 1 minus alpha P2x, where the scalar 0 greater than or 1 is मतलब alpha is less than 1. Is the mixture weight. And P1x and P2y, sorry P2x are univariate Gaussian densities. With different parameters, parameters. Then the mean of the mixture density P of x is given by the weighted sum of the
means of each random variable a of x comma is equals to alpha mu1 plus 1 minus alpha mu2. The variance of the mixture density px is given by mixture density p of x is given by summation of x is equals to summation of sigma x square plus 1 minus alpha sigma 2 chi square plus alpha mu1 chi square plus 1 minus alpha mu2 chi square minus alpha plus 1 minus alpha mu2 chi square 6.82. यह 6.81. लो भैया प्रूफ. The mean of the mixture density px is given by the weighted sum of the means of each random variable. We apply the definition of the mean and plug in our mixture 6.80 which yields, oh my god, the mean of the mixture density p of x is given weighted sum of means each we apply the definition of the mean. P of x is equals to summation of minus infinity to infinity xp of x dx. xp of x dx. अब यहाँ पे हमारा p की वैल्यू रखी गई है. p की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी अल्फा एक्स p1 x प्लस 1 माइनस अल्फा एक्स p2 ऑफ x dx. इसको सॉल्व करेंगे. अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स p1 x चलेगा dx प्लस 1 माइनस अल्फा कांस्टेंट है तो माइनस बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स p2 x dx हो जाएगा. को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पूरा, इस इधर वाला पूरा हो जाएगा म्यू और ये हो जाएगा म्यू2. तो अल्फा म्यू1 प्लस 1 माइनस अल्फा म्यू2.
टेक्स्ट बुक सोर्स लिंक में है शाश्वत भाई, जो टेक्स्ट बुक का सोर्स है वो लिंक में दिया हुआ है मैंने गिटहब की रिपोजिटरी, उसमें मेरे प्रोजेक्ट फाइल्स भी पड़े हैं, ठीक है, जो मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, वो जितनी भी बुक्स हैं मेरे पास वो सारी बुक्स यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं। एक ML बुक करके है, मतलब 2 अलग अलग फोल्डर हैं, दोनों अलग अलग फोल्डर्स में बुक्स पड़ी हुई हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, एक तो ये बुक है जिसमें हमारे पास कई ये 7-8 बुक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बुक यहाँ पे हैं, और जिसमें से मैंने अभी तक ये वाली कंप्लीट पूरी कर डाली है, लीनियर अलजेब्रा फॉर मशीन लर्निंग। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर ML, और जो कि बुक का नाम ML बुक्स इस वाले फोल्डर में मिलेगा, ये मैथमेटिक्स फॉर ML, ओके, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगी आपको बुक मैथमेटिक्स। और इस गिटहब पे मैंने पूरा पोस्ट करके रखी है, ये वाली बुक भी, इसकी गिटहब की रिपोजिटरी आपको कहाँ मिलेगी, ये अलग से रिपोजिटरी है इसकी भी, लेकिन मैंने अपनी रिपोजिटरी में भी पोस्ट करके रखा है इस बुक को, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक तो हो गया। To compute the variance, we can use the raw score version of the variance from which requires an expression of the expectations of the square random variable, where we use the definition of the random expression of an expectation of function, the square and the random variables. Welcome bro, random variable. यहाँ पे मान 1 मिनट, here we use definition of an expectation of function of a random variable. The definition of an expectation of a function. The square of random variable, जो कि है e of x square is equals to integration of minus infinity to plus infinity x square p x dx, और जैसे p की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर p1 का x प्लस 1 माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर p2 ऑफ x dx। तो अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर रखने के अलावा। एक अल्फा कांस्टेंट यहाँ है, 1 माइनस अल्फा कांस्टेंट, दोनों में तो अल्फा कांस्टेंट माइनस अल्फा टू अल्फा प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर चलेगा, ये रहेगा p1 x dx प्लस 1 माइनस अल्फा और एक्स स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रेशन माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा p2 ऑफ x dx, और इसका क्या यहाँ पे x का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका जगह म्यू आने वाला है, तो म्यू पहले के तरीके μ1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फा कॉमन, एक मिनट, यहाँ पे 1 प्लस अल्फा और यहाँ पे μ2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर। Hello guys, where in the last equality we use the raw score version of the variance given sigma square is equals to e of x square minus mu square. This is rearranged such that the expectation of the square, the random variable, is the sum of the square, mean and the variance. Therefore the variance is given by subtracting
Variance is given by the subtracting किस इक्वेशन को 83D को मतलब कि इसको नहीं 84 एक मिनट हाँ हेलो सॉरी यार ये बीच में थोड़ी इंपॉर्टेंट कॉल वगैरह आ जाती है तो उठाना पड़ता है मुझे therefore the variable is given by subtracting is given by 这个出来，先小草个找。ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है ए में 1 स्क्वायर और माइनस सिग्मा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा मीटर स्क्वायर या ठीक है, यानी कि इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है अल्फा
mu1 square plus sigma 1 mu1 square plus 1 minus अल्फा और mu2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा और साथ ही इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 पॉइंट इस वाले से अल्फा mu1 प्लस 1 माइनस अल्फा mu2 अल्फा mu2 का पूरा ब्रैकेट का होल स्क्वायर होगी उसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा is equals to अल्फा सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस 1 ये हुआ इस पूरे में से अल्फा सिग्मा 1 का स्क्वायर लेंगे और 1 माइनस अल्फा सिग्मा 2 का स्क्वायर यानी कि कॉमन निकल रहा है ऐसे क्योंकि अच्छा इसको ऐड करूँगा इसका तब अल्फा सिग्मा 1 माइनस अल्फा सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस अल्फा सिग्मा mu1 का mu1 का 1 माइनस अल्फा mu2 का स्क्वायर माइनस अल्फा mu1 प्लस 1 माइनस अल्फा mu2 का होल स्क्वायर। ठीक है, remark the preceding derivation holds for 6.8.6 6.85c The preceding derivation holds for any density, but since Gaussian is fully determined by the mean and variance, the mixture density can be determined in closed form. For a mixture density, the individual components can be considered to be a conditional distribution condition of the component. Equation is given example of the conditional variance formula, also known as the law of total variance, which generally states that for two random variables x, y, it holds variance x is plus the variance of conditional mean. We consider this bivariate standard Gaussian random variable x and performed a linear transformation in x on it. The outcome is a given random variable with mean 0 and covariance a e to the power t. Observe that adding a constant vector will change the mean of the distribution without affecting its variance, that is the random variable expressed mu is Gaussian with mean and identity covariance. Hence a linear affine transformation of a given random variable is given Gaussian distribution. Consider a Gaussian distribution random variable for a given matrix A appropriate say let y be a random variable such that y is equals to ax. Transform version, we can compute the mean of the y by exploiting the linear operations as follows. Similarly, the variance of y can be found by using y of x is equals to a of x a inverse
with summation of a to the power of t. This means that the random variable y is equal to py is equals to n y a comma a sigma a to the power of t. It is not 6.88. What is the corresponding probability distribution? If as is invertible, then we can write x is equals to a inverse y and apply the transformation in the previous paragraphs. However, in general, it is not invertible, and we use an approach similar to that of pseudo inverse. That is, we pre-multiply both sides a to the power t and then invert a to the power t into a, which is symmetric and positive definite given is the relation y is equals to ax or a to the power t a Hence, x is a linear transformation of y. We obtain g of x is equals to n x or a to the power t a minus 1 a to the power t y a to the power t a minus 1 a to the power t summation a to the power t a minus 1. Sampling from multivariate Gaussian distribution. Conjugacy इसके बाद Gaussian बहुत sampling from multivariate Gaussian distribution. We will not explain the subtleties of random sampling on a computer, and interested reader is referred to gentle. In the case of multivariate Gaussian, this process consists of 3 stages. First, we need a source of pseudo-random numbers that provide a uniform sample in the interval 0, 1. Second, we use a non-linear transformation such as Box-Muller transform, De Roy 1986, to obtain a sample from a univariate Gaussian. And third, we collate a vector of these samples to obtain a sample from a multivariate standard normal n for a general multivariate Gaussian, that is, where the mean is non-zero and the covariance is not the identity matrix. We use the properties of linear transformation of a Gaussian random variable. Assume we are interested in generating simple samples x I is equals to y is equals to 1 to the n from multivariate Gaussian distribution with mean and covariance matrix sigma. We would like to construct the sample from a sampler that provides samples from the multivariate standard from n 0, I to obtain samples from multivariate. If x and y, then y is equals to x plus mu, where a to the power t sigma is a Gaussian distributed with mean covariance matrix. One convenient choice of A is to use Cholesky decomposition of the covariance matrix. Efficient computation, conjugacy, exponential. इसके बाद हमारे पास क्या है, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे कवर. फिर इसके बाद बेटा बाइनोमियल कंजंक्सी, फिर बेटा बर्नौली, ये इंपॉर्टेंट है.
sufficient statistics, फिर exponential family और Gaussian exponential family, important distribution functional technique और चेंज ऑफ। अब नेक्स्ट क्लास में सोच रहा हूँ पूरा कवर कर ही दूंगा, मतलब 1-1.5 घंटे लगेंगे लगभग कवर करने में। फर्दर रीडिंग ये नहीं करना है, बस यहाँ तक करना है। हाँ नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा ये। एक्सरसाइज है क्या ये? कंसीडर द फॉलोइंग बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स x and y। इसको सॉल्व कंसीडर ऑफ 2% डिस्ट्रीब्यूशन। चलो ये तो हमारे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन इसके बाद इसमें, लेकिन इसके अलावा हम सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ेंगे अब। और अभी के लिए बाय बाय, टाटा। और हाँ, जो लोग वीडियो की बात कर रहे थे मान लो, तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना आप लोग, है ना। और हाउ एलएलएम्स माइट आल्सो, ये भी देख लेना, ठीक है। ये दो वीडियो, एक और न्यूरल नेटवर्क वाली वीडियो बोल रहा था ना मैं, कहाँ गायब हो गई ये बुक? इनसाइड एंड एलएलएम, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाली, ये और ये एक और बताई थी मैंने पहले स्टार्टिंग, वो वाली वीडियो भी देख लेना बस। बाकी और भी हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं हम अब नेक्स्ट क्लास में। रात को ओपन सीवी वाली क्लास रहेगी, जिसमें मैं ओपन सीवी रीड कर ही रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ ओपन सीवी की भी साथ में, क्योंकि थोड़ी बोरिंग ना हो क्लास वगैरह, इस वजह से बीच बीच में कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह भी क्रिएट करते रह रहे हैं, ठीक है। हाँ प्रोबेबिलिटी वाली ज़्यादा हो गई है, थ्योरी वाली चीज़ें, लेकिन ठीक है, ज़रूरी है इसलिए पढ़ा जा रहा है उसको, ठीक है। बाय बाय। और जो लोग अभी हैं, अगर उनको लगता है कि इस बुक की या किसी भी प्रोजेक्ट वगैरह की चाहिए हमें, तो वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है लिंक गिटहब की। और अभी कुछ देर में मैं गिटहब में पूरी रिपोजिटरी पोस्ट कर दे रहा हूँ, जो बचा हुआ पार्ट है, जो आज का है, कल का है, मतलब जो बचे हुए कई दिनों के, उसको ही पोस्ट कर दूंगा। और बुक्स वगैरह सारी सारी रिपोजिटरी के अंदर पड़ी हुई हैं। जो हमारी 9-10 बुक वो अलग से है, जिसमें लीनियर अलजेब्रा वगैरह वाली हैं, और मैथमेटिक्स फॉर एमएल जो भी पढ़ रहे थे वो वाली बुक, वो अलग बुक में है, मतलब अलग फोल्डर में है, ठीक है। मैथमेटिक्स फॉर एमएल नाम से नहीं, मशीन लर्निंग बुक करके है, उसमें पढ़ा हुआ फोल्डर, ठीक है। दिखा दे रहा हूँ, AI-ML, ये देखोगे तो ये ML बुक एक वाली पड़ी हुई है, एक ये ML बुक पड़ी हुई है, ये दो अलग अलग पड़ी हुई है, ठीक है। दोनों में अलग अलग बुक्स हैं, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि शाम को फिर से मिलेंगे ओपन सीवी की क्लास में।